Hello guys, welcome to a new series, Wrench Throttle. This is probably the episode 1 of that series. So एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें लाइक एज द नेम सजेस्ट रेंज एंड थ्रोटल, जिसमें हम बाइक मॉड्स के बारे में बात करेंगे एंड ऑल्सो अ बिट ऑफ अबाउट मी, अगर कुछ हुई बात तो आगे. सो लाइक हाउ आई स्टार्टेड दिस जर्नी, व्हाट मॉडिफिकेशन आई डिड टू माई मशीन एंड लाइक व्हाट आई एम गोइंग थ्रू, व्हाट माई मशीन इज़ गोइंग थ्रू. तो ये सारी चीज़ें बात करेंगे. तो आज के लिए फॉर दिस एपिसोड 1 आई गॉट फ्यू मैसेजेस और फ्यू कमेंट्स आस्किंग अबाउट माई सेटअप, क्योंकि मेरा हैंडल बार पूरा भरा पड़ा है. यू गाइज हैव ऑलरेडी नोटिस दैट. तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे कि व्हाट द थिंग्स आई हैव इंस्टॉल्ड ऑन माई बाइक. सो पहले एक छोटा सा टूर ले लेते हैं एंड इंडिविजुअल डिवाइसेस के बारे में हम बाद में अलग अलग वीडियोस में बात करेंगे. कुछ डिवाइसेस रिव्यूज़ एंड रियल टॉक में होंगे, कुछ डिवाइसेस रेंज एंड थ्रोटल में होंगे. तो लेट्स टॉक अबाउट दैट. सो सामने से शुरुआत करते हैं. तो फर्स्ट थिंग, अल्टीट्यूड मोटो का GPS माउंट है एंड ऑन दैट द हिमालयन 450 विंडशील्ड. द फॉग लैम्प्स के बारे में बात करें तो आई हैव इंस्टॉल्ड 2. This is HJG125 model and this is HJG mini model. So I am using this 2 mounts. So actually I use dual like yellow and white, so that's why I have 2 fog lamps. These are Tramps bullet indicator only, which comes as a part of accessory. So like nothing like aftermarket thing. Then after that I have this Rhinox handguard. So the reason I went with the Rhinox handguard is Rhinox handguards have different parts. Like this is the main muffler, this is the wind guard, and there is one slider. So I had accident with this. So जब भी accident होता है, only the slider thing get damaged, which you can easily get replaced from the Rhinox. So initially तो 2 replacement within 2 years are free, but post that there is any damage to this, you can get it replaced with the payment. Then these are the Colga Bro adventure mirrors. So उनका version 2 भी आ गया है, but I went with the version 1 क्योंकि classic look है. version 2 is kind of a modern look which I won't prefer. So these are the things जो सामने से easily visible है. Let's come to the handle now. So talking about handle, तो यहाँ पे एक्चुअली बहुत सारे की बटन्स है, अमाउंट्स है. सो लेट्स टॉक वन बाय वन. So this is button for the HJG125 lamps which I just showed, and this silver button is for the HJG mini lamps. So these 2 buttons are the fog lamps. ये रेड वाले बटन के पीछे एक ब्लू बटन है on the back side. So here on the back side it's a blue button which is a flasher kind of thing. Red is for the constant light and blue is for the flasher, while this one is like on off to change the mode. Then this 3 button module is the Aoshi's button module, and this on slide switch is I have a dual horn setup. So I have the stock horns as well as I have this air horns. So उसके लिए है. So I am using the common button. I just switch it from with this. तो उसका एक अलग harness आता है which is I installed. Then these 2 are the PIC design mobile mounts. So this is the one with the charging, and this is without charging. It's just a simple mount. तो एक इनका एक ड्रॉबैक है कि इसमें चार्जिंग ऑन ऑफ करने के लिए नहीं आता है. सो आई इंस्टॉल्ड 1 बटन बाय माई सेल्फ. तो ये मैंने अमेज़ोन से ख़रीदा एंड आई जस्ट पुट द कनेक्शन टू द बैटरी, लाइक जहाँ पे इसका टर्मिनल बैटरी को कनेक्ट होता है. सो दैट वेयर आई कनेक्टेड द स्विच. तो ये स्विच मतलब यहाँ पे कट करके भी लगा सकते हैं, बट आई डोंट वांटेड टू डैमेज द पिक डिज़ाइंस प्रॉपर्टी बिकॉज इसकी वारंटी लाइफ टाइम होती है. सो दैट्स वाई इसका कनेक्शन मैंने जहाँ पे बैटरी कनेक्शन होता है, बैटरी टू दिस माउंट, वहाँ पे दिया है. देन दिस इज़ माई 360 माउंट. तो उसके लिए ये यंत्रालय का एक क्लॉ है एंड यहाँ पे एक उलानजी का क्लॉ है. ऑन दैट दिस माउंट इज़ दिस स्टिक इज़ सिचुएटेड. तो दिस इज़ एक्सटेंडेबल स्विच. ये बाय डिफ़ॉल्ट Osmo 360 के साथ आ जाती है. देन दिस इज़ Aoshi's U9 डिवाइस एंड दिस इज़ द वोल्ट मीटर, जस्ट अ सेफ्टी डिवाइस बिकॉज बहुत सारी चीज़ें कनेक्टेड है. सो इट शोज़ द बैटरी वोल्टेज.
तो 12 के नीचे गया, दैट मीन्स यू नीड टू टर्न, इट्स टाइम टू टर्न ऑन द व्हीकल, लेट द बैटरी चार्ज. सो दैट्स वाई एक प्रिकॉशनरी है. देन आई हैव दिस 2 चार्जर्स. सो मेरा एक्चुअली जो ट्रैम का USB है विच इज़ लोकेटेड ओवर हियर, ये मेरा एक्चुअली इशू प्रॉब्लमेटिक है. आई एम येट टू गेट इट रिप्लेस्ड. सो दैट्स वाई आई इंस्टॉल दिस टू, बिकॉज कैमरा एक्सेसरीज वगैरह बहुत सारा होता है, तो आई यूज़ दिस टू. सो दिस इज़ फ्लॉयड 60 वैट चार्जर. तो 30 वैट का एक USB-C पोर्ट है. So this is the cap, USB-C port है, एक USB-A port है. So this is a fast charger. We have a button over here and यहाँ पे एक LED indicator है which turns on. And this is a Amazon, like randomly मैंने Amazon पे मिला, Amazon पे search करा for and वो order किया. So it also have, so both are waterproof. This is like tried and tested for about a year. तो दिस इज़ फुल्ली वाटर प्रूफ. इवन लाइक बहुत टाइम ऐसा हुआ है कि बारिश चल रही है एंड आई एम स्टिल प्लग्ड इन, बट कुछ डैमेज नहीं हुआ है. दे से दिस इज़ वाटर प्रूफ, बट आई डाउट. देन कम टू हियर, दिस इज़ जस्ट अ पाम रेस्ट, मतलब लॉन्ग जर्नी पे इट गिव्स ease to ride. And then I have a ProRes cruise control, again long journey के लिए ये easy रह जाता है. So this is thing. So these are the things I have mounted over the handle. ये तो just एक camera mount है, B-roll mount. And come to here, I have this bottle mount. So I ordered this from Sarkart. And on that side I have this bag. तो एक्चुअली मुझे फ्रेम बैग इंस्टॉल करना था, बट उससे ऐसा हो जाता फिर वेट बढ़ जाता है, बिकॉज ये बार वगैरह डालेंगे. आई एम स्टिल थिंकिंग ऑन दैट, बट टिल दैट टाइम आई इंस्टॉल दिस रॉक ब्रोज बैग. सो दिस इज स्टॉर्म प्रूफ बैग. एक्चुअली ये बाइक का एक्सेसरी नहीं है, ये बाइसिकल का एक्सेसरीज है. बाय यूजिंग दिस राउंड क्लिप्स, टाइटिंग क्लिप्स, आई इंस्टॉल्ड इट ऑन द handle bar, onto the crash guard. So that's the thing. And come to here, I have this Grand Pistop air seat. पहले जेल सीट थी, अभी जेल सीट का ऐसा है कि यूज़ कर करके वो पतली हो जाती है एंड अल्टीमेटली यू नीड टू चेंज इट. सो आई स्विच टू एयर सीट. इट्स वर्क्स ऑन पम्प्स, सो भले ही डिफ्लेट हुआ यू कैन इन्फ्लेट इट अगेन. ओनली द इशू इज़ विद पंक्चर, यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट. तो अगर आपकी हैंडलिंग अच्छी होगी you won't have to face that issue. Then I have this auto engine saddle stays, जो छोटे कॉम्पैक्ट एंड लुक में भी अच्छे है, ऐसा मुझे चूज़ करना था. सो दैट्स वाई आई वेंट विद द ऑटो इंजन. देन द LS2 45 लीटर टॉप बॉक्स एल्यूमिनियम. तो यू कैन सी ब्रांडिंग ईयर, ये बेल्ट के पीछे छुप गई है. एंड यूज़ सम सेफ्टी हार्नेस, बिकॉज इसके जो बुश है वो डैमेज हो सकते हैं. सो दैट्स वाई दिस बेल्ट्स आर इंस्टॉल्ड. आई ऑर्डर्ड इट फ्रॉम द अमेजोन. आई विल पुट दैट लिंक एज वेल. एंड यहाँ पे एक सेकेंडरी क्लॉ है. आई रेयरली यूज्ड इट. इट्स अ यंत्रालेस क्लॉ, but still for some B-roll shots I installed it. And another thing, this LED flasher, again this is a random Amazon find. I attached it to the brake light. So actually मतलब ये टॉप बॉक्स एंड ये सब की वजह से मेरा टेल लैम्प इतना विजिबल है नहीं. सो दैट्स व्हाई आई इंस्टॉल दिस. दिस इज़ अ फ्लैशर लाइट, तो आपको मतलब ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो जाता है. एंड आई हैव दिस टायर हगर और मड गार्ड, वॉट एवर यू से. दिस इज़ अगेन फ्रॉम द अमेजोन. आई विल पुट द लिंक. अभी आई थिंक इट्स आउट ऑफ स्टॉक फॉर नाउ, बट इसके अल्टरनेटिव मतलब रिलेटेड प्रोडक्ट्स में आपको सेम मिल जाएंगे. देन कम टू हियर, आई हैव दिस suspension guard. So this I like recently installed. I'm here to see the performance of like how it's doing, but till now what I have observed, it does its work pretty well. Then I have this oil cap. So ये तो मतलब this one I will put the link. This I order from one is Moto Moriko, so you can contact him. These are again random Amazon things. So I think that's all I have on my bike. So अगर आपको किसी इंडिविजुअल प्रोडक्ट के बारे में जानना है, ये एओशी का आई विल बी मेकिंग अ वीडियो सून. अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ़ यू वांट टू नो अबाउट एनी डिवाइस ऑन माय बाइक, डू लेट मी नो, कमेंट दैट आउट, आई विल आंसर इट. और आप मुझे DM कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, एनीथिंग यू कैन डू. सो
Yeah, I think that's all for this episode 1 of Wrench and Throttle. And फिर मिलते हैं with the new escape or a new episode of any series. तब तक के लिए goodbye, take care and ride safe.